Biology multiple choice extended paper code 22 and series is October November 2021 सीरीज है ये, ठीक है। 45 मिनट्स का आपके पास पेपर होगा। 40 आपके पास इसमें एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। कुछ एमसीक्यू होते हैं जिसमें कि आपने थोड़ा सा अपने ब्रेन को एक्टिव करना होता है और कुछ होते हैं जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं, ठीक है। सो जो है टाइम वो आपका मोस्टली, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो यू कैन फिनिश इट इन 35 मिनट्स, ठीक है। 30 to 35 मिनट्स में आप अच्छा सा इसको कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। All living things can remove toxic material and other substances that are in excess of requirements. What is this process called? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Extinction. Good. Two animals have an identical sequence of amino acids in one of the protein found in their cells. ठीक है, identical sequence of amino acids in one of the proteins found in their cells. What does this indicate about these animals? They have been eating the same type of food. They have not been exposed to substance that cause mutation. They must be member of the same genus. They share an ancestor. So, they share an ancestor. Yes. So if they have a protein which has identical sequence of amino acid, it means they share an common ancestor. The diagram shows some tissue in part of our plant root. The arrow represents the movement of water into and across the plant root tissue. या तो रूट हेयर सेल बेसिकली आपको उन्होंने ये शो किया हुआ है और उसमें फ्रॉम रूट हेयर सेल जो वाटर है वो कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इसमें आपको कितने टाइप्स के टिश्यू नज़र आ रहे हैं? इसमें आपको 4 टाइप्स के टिश्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? देखो जाइलम तो हमें है, ये है जाइलम, ठीक है। दिस इज द जाइलम, यहाँ से पानी जो है फिर वो कंडक्ट होगा अपर साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इधर इधर आ जाते हैं ना, इस तरफ में हमारे पास आ जाएंगे रूट हेयर सेल में। रूट हेयर सेल जो है इसके टिश्यूज आ जाएंगे एक तो, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू आ जाएंगे, उसके बाद हमारे पास कॉर्टेक्स टिश्यू आ जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर 4 टिश्यू इन रूट्स। तो ये आपके पास हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। The length of a mitochondrion in a photomicrograph is 15 mm. The actual length of the mitochondrion is 3 micrometer. What is the magnification of the photomicrograph? ठीक है, तो आपने मैग्निफिकेशन के लिए आपने पहले इसको चेंज कर लेना है। 15 mm को आपने किस में चेंज कर लेना है? माइक्रोमीटर, ठीक है। सो ये मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ।
it is मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 multiply by 1000, it is 15,000. Then length of the mitochondrion divided by actual length, and it is 5,000. Option number C. The diagram shows some cells: cilia, cytoplasm, nucleus. What are these cells found? मतलब ये जो हमारे सेल्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, ब्रोंकस. ठीक है, याद है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें ब्रोंकस में आपके पास ये सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है. Which statement about diffusion is correct? Good. The diagram shows the uptake of mineral ions by root hair cells. ठीक है, आपको uptake of mineral ions by root hair cell वो शो कर है. Mineral ion passing into the root hair cell from the soil, energy, cell membrane inside the root hair cell. Which type of molecule is labeled X in the diagram? Which type of molecule? अगर आप मॉलिक्यूल की आप शेप देखें तो आपको क्या इस शेप से आइडिया हो रहा है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल हो? ठीक है, नहीं, इट इज प्रोटीन. प्रोटीन क्यों होगा ये देखें शेप. ठीक है, और ये शेप इसकी क्या शो कर रही है? यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन सकता है. ठीक है, एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन, सो इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. The bases on one of the strand of a DNA molecule have this sequence shown. तो आपको उन्होंने sequence one of the strand, ठीक है, this is the one strand, और उसके ऊपर ये आपके पास sequence. What is the corresponding sequence of bases on the other strand? तो हम other strand हम draw कर लेते हैं. वो हमें पता है कि with A it is always T, okay, and with T it is A, with C it is G, with T it is A, and with G it is C. So हमारे पास इससे मैच करता हुआ कौन सा सीक्वेंस आ रहा है? This one, T T A G A C. Got it? In a photosynthesis experiment, a plant is left in bright sunlight for several hours. A leaf is then removed from the plant and tested for starch using iodine solution. The diagram shows the leaf from the plant that were used in the experiment. So this is the white area and this is the green area. Okay. Which diagram shows the result of the experiment? Iodine solution turns blue-black and iodine solution stay brown. Yes. Good. An experiment was carried out to investigate the effect of pH on enzyme action. The graph shows the result. Okay. So, ये इसकी peak activity. What are the labels for the x-axis
एंड दी वाई एक्सिस। आपने लेबल्स बताने हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पे हम क्या लेबल करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे पीएच आएगी, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, क्योंकि दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो पीक पे जा रहा है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज पीएच। सो ऑप्शन इज ए। 4 test tubes were set up as shown in the diagram. In which test tube is the star digested most? ठीक है, डायग्राम को हम देख लेते हैं। वाटर बाथ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टार्ट सोल्यूशन विद एमाइलेज, ठीक है, दिस इज एमाइलेज, स्टार्ट सोल्यूशन एंड बॉइल्ड एमाइलेज। तो बॉइल्ड एमाइलेज की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। वाटर बाथ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टार्ट सोल्यूशन एंड एमाइलेज, स्टार्च सोल्यूशन एंड बॉइल्ड एमाइलेज। तो बॉइल्ड की अल्टीमेटली कोई नहीं होगी, और एंजाइम जो है दे आर वर्क बेस्ट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन इज सी। गॉट इट? Next. Two similar leaves are set up in test tube as shown. One is exposed to light while the other is kept in the dark. ऑरेंज हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर सोल्यूशन हमने लिया, ठीक है। ग्रीन लीफ, इसको हमने ब्लैक पेपर में रैप कर दिया, एंड दिस इज दी, इसको हमने सनलाइट में और लाइट में हमने इसको एक्सपोज किया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स विच कलर वुड द हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर सोल्यूशन बी इन ईच टेस्ट ट्यूब? सो हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होगा इट इज पर्पल in light and it is yellow in dark, ठीक है। ऑरेंज सोल्यूशन था, ये येलो हो जाएगा डार्क में, ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट जो इसमें था एक्सपोज टू लाइट, सो इट बिकम्स पर्पल। सो द ऑप्शन इज बी। The diagram shows the surface view of part of the epidermis of a leaf. How many guard cells are present? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 guard cells. The diagram shows part of the alimentary canal and associated organs. Where does most water absorption take place? हाँ जी, ये तो आप बताएं ना, वाटर absorption कहाँ पे होगी सबसे ज़्यादा? बी। Okay. The diagram shows a large food molecule changing into smaller molecule. Okay, this is the large food molecule and now it is changes into smaller molecule. Okay, यानी breakdown हो गया. What is process X?
च्यूइंग कैसे हो गई? देखो च्यूइंग में वो तो नहीं होगा ना, मॉलिक्यूल्स जो है, देखो जब आप फूड को च्यू करते हैं ना, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ बोलस, ठीक है। अब बोलस में आपके पास सारी फूड उसी तरह है, बट इट इज थोड़ा सा वो सलाइवा के साथ लुब्रिकेट होके थोड़ा सा वो मॉइस्ट हो गई है फूड, और क्लम्प सा बन गया, बोलस टाइप बन गया। फिर उस बोलस ने जाना है स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में जाके वो उसने ब्रेक डाउन होना, ठीक है। अब अगर आप ये देखें, आपको 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। 3 टाइप्स मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसको सिंपली कह सकते हैं दिस इज रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ प्रोटीन्स हैं, एक आपके पास स्टार्च है या ग्लूकोज है, देन इट इज ग्लूकोज कह लें आप या माल्टोज कह लें, देन इट इज फैटी एसिड, ठीक है। तो ये तीनों जो है इधर इस प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस जो ये सब्सटेंसेस हैं, दीज आर सेपरेट, सेपरेट हो गए, ठीक है। सो इट इज डाइजेशन, ठीक है। तो जब अभी इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं स्टार्ट हुई, अभी ये सिर्फ जो है आफ्टर प्रोसेस एक्स ये सिंपली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए। गॉट इट? The diagram shows a newly planted seedling and the same seedling a few hours after being planted. What is the correct explanation for the change in the appearance of the leaves? क्या होगा इसमें? अगर आप देखें, transpiration is faster than water uptake by root hairs, so cells have become flaccid. Skip, cells flaccid. Transpiration is faster than water uptake by root hairs, so cells have become. Yes, it's 17. Translocation is the movement of sucrose and amino acid in the phloem tissue of a plant from source to sink. Which organ can act as a source? Source बेटा, sink नहीं, ठीक है। This is a tree, for example ये apple tree है, ठीक है। And इसमें पहले flower आएगा and then it is fruit बनेगा, ठीक। It is downward, ठीक है। तो downward है, then it is sink, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास स्टोरेज रूट, इधर इसकी रूट, so its option is D. Which component of blood produces antibodies? Antibodies बेटा lymphocytes produce. Where do shunt vessel connect? Shunt arterioles to venules, ठीक है। शंट वेसल्स को कौन सी चीज कनेक्ट करती है? तो वेसल्स को जो चीज कनेक्ट करती है वो आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स होती हैं, ठीक है।